Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 28 for the subject of operating systems. In this lecture we are going to start another topic, that is main memory management. We discussed earlier that operating system acts as a resource allocator. So in this regard we discussed different scheduling algorithms. Now the scheduling algorithms involved allocation of CPU to particular process selected by the CPU scheduler for execution. Now a processor or a CPU is a resource. Similarly, the main memory is also a resource. So in this lecture we are going to discuss basic details about the memory management system involved in operating systems. So first of all we will discuss what is memory management, what are the basic requirements of memory management like relocation, protection, sharing, translation, loading, linking and memory management unit. Now what is memory management? We discussed that we have two entities, one is the program and the other one is the process. Now a program is a passive entity because there is no sort of activity, but when a program is loaded into the memory, a program becomes a process. So you can say that process cannot run unless its code and data are loaded into the memory. If you remember, we discussed the layout of a process in a memory. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक प्रोसेस को मेमोरी में लोड करते हैं तो मेमोरी में उसके डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं, जिसमें टेक्स्ट सेक्शन एग्जिस्ट करता है, फिर उसमें स्टैक एग्जिस्ट करता है, फिर शेयर्ड डाटा एग्जिस्ट करता है, फिर इसके बाद हमने रजिस्टर्स की बात की थी. सो ए प्रोसेस कैन ओनली रन इफ़ इट्स कोड एंड डाटा आर लोडेड इनटू द मेमोरी. So CPU gets all the instructions and data from the RAM for execution. क्योंकि अगर हम CPU को सारी चीज़ें हार्ड डिस्क से प्रोवाइड करें तो उससे हमारी प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो होगी. इसलिए किसी भी प्रोग्राम को जो आपने रन करना है उसको सबसे पहले मेमोरी में होना ज़रूरी है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट? द फर्स्ट इशू इज़ द मल्टी प्रोग्रामिंग. Our modern operating systems are multi-programmed systems. It means that we have multiple processes in the memory that are ready and waiting for CPU. So you can say that an operating system has to manage a number of processes in the memory, चाहे वो ready state में हो चाहे waiting state में हो. Similarly, for executing a process, the data and instructions must be in the RAM. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम बजाते ख़ुद भी एक प्रोसेस है या सिस्टम प्रोसेस है. ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व है. लेकिन हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि कभी भी हम कम्प्लीटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड नहीं करते, बल्कि उसको चंक बाय चंक रैम में लोड करते जाते हैं. सो इट मीन दैट अगर हमने किसी भी प्रोसेस के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, इट्स डाटा एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द मेमोरी. सिमिलरली वी हैव मल्टीपल processes in the memory, so operating system should protect one process from another. In other sense, you can say that an operating system should disallow one process from accessing instructions and data of another process. Similarly, if multiple processes are working on the shared data, in this case operating system should allow the access to shared data. Then our RAM is not enough to accommodate all the processes. Just like अगर हम Microsoft Windows की बात करें तो जब आप इस Windows को इंस्टॉल करते हैं तो इसका साइज़ तकरीबन 8+ GB में बनता. नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में 4 to 8 GB रैम है. सो इट मीन्स हम सारे के सारे प्रोसेसेस को रैम में एकोमोडेट नहीं कर सकते बिकॉज रैम इज़ लिमिटेड इन साइज़, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ रैम इट इज़ कॉस्टली. So memory management system or memory management part of an operating system solves these issues. It shares memory among different processes in efficient, effective and secure manner. So memory management unit का काम क्या है कि वो RAM को different processes में share करे
ताकि प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन भी चलती रहे, हमें रिजल्ट्स भी अचीव होते रहें, डेडलॉक की कंडीशन भी ना जनरेट हो और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से सिक्योर भी रहे. सो दिस इज़ द मेजर functioning of the memory management unit. Now we have different types of addresses involved in the memory management system. We have symbolic addresses, logical addresses, relative addresses and physical addresses. Now what is a symbolic address? Symbolic addressing scheme refers to an address made by convenient symbol. और in other words आप ये कह सकते हैं कि सिम्बॉलिक एड्रेसिंग एक ऐसी एड्रेसिंग स्कीम है जिसमें हम सिम्बॉलिक एड्रेसेस यूज़ करते हैं. सो सिम्बॉलिक एड्रेसिंग बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं एड्रेसेस डिफ़ाइन करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, we use variable names in our programs, we use go to labels, we use function names and parameter names, we call different functions. So all these are basically symbolic addresses. Now these symbolic addresses are convenient for programmers, so you can write programs easily and remember different variables easily. Now the second thing is a logical address. A logical address is generated by CPU while a program is running. Although a program is loaded into the memory, but the CPU doesn't generate the memory addresses. In fact, CPU generates logical addresses. Now a logical address is a virtual address that doesn't exist physically, so you can simply call it as an virtual address. Similarly, a logical address is independent of the physical memory. As you already know that the physical memory or RAM or memory has different memory cells and each cell has a specific address. So, but logical addresses are not the addresses of a physical memory. Now, a logical address space is used for the set of all logical addresses जनरेटेड बाय ए प्रोग्राम्स परस्पेक्टिव. यानी आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें फंक्शन कॉल्स हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की नंबरिंग हो सकती हैं, डिफरेंट डाटा आइटम्स की एड्रेसिंग हो सकती है. सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस किसी भी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी एड्रेसेस आते हैं उन सब को स्टोर करता और उन सब को मैनेज करता. नाउ व्हाट इज़ ए रिलेटिव एड्रेस? ए रिलेटिव एड्रेस मीन्स एन एड्रेस स्पेसिफाइड बाय indicating its distance from another address, and the another address is known as the base address. So you can define the relative address as कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम बेस एड्रेस कह देते हैं, बाकी सारे एड्रेसेस हम उसके रेफरेंस से एक्सेस करते हैं. जस्ट लाइक जैसे हम एक दूसरे को घरों का एड्रेस समझाते हैं तो हम किसी शॉप से किसी पर्सन को कहते हैं कि आप लेफ़्ट साइड से 4 घर छोड़ें तो घर मिल जाएगा. तो ये एक रिलेटिव एड्रेस की एग्जांपल है. इसमें बेस एड्रेस वो शॉप है और उधर से जो 4 घर छोड़ना ये आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस है. सो रिलेटिव एड्रेस इज़ काइंड ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस दैट एक्सप्रेसेस ए लोकेशन रिलेटिव टू सम नोन पॉइंट. फॉर एग्जांपल, वी हैव ए बेस एड्रेस B and we have a distance of 5. So we can say that B plus 15 is a relative address, or B minus 15 is also a relative address. Now what is a physical address? Physical address identifies a physical location of required instruction or data in the main memory. यानी रैम के जो बेसिकली एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे फिजिकल एड्रेसेस हैं या एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं या एक्चुअल एड्रेसेस हैं. Now a user never directly deals with the physical addresses, but user can access the physical addresses with the help of corresponding logical addresses and symbolic addresses. Now what is a physical address space? The term physical address space is used for all physical addresses corresponding to a logical addresses in the logical address space. यानी एक CPU जितने logical address space जनरेट करता है उसके corresponding हमारे पास जितने भी physical addresses हैं उन सब को मैनेज physical address space में करते हैं.
In short, a physical address is the actual location of a computer program and its data in memory. Now we have basic requirements of memory management system. So these are the basic requirements. The first one is the relocation, the second one is protection, then we have sharing, and then we have program translation and address space. Similarly, we have loading and linking as well. Now what is relocation? Here is the formal definition of relocation. Converting a logical address into a physical address is known as relocation. Whenever a CPU generates a logical address, the memory management unit translates this logical address into equivalent physical address. So this process is known as relocation. Now a main memory is a shared memory that enables multi-programming. So where the program will load, you can't tell this in advance. यानी क्योंकि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, नए प्रोसेस क्रिएट होते हैं, मेमोरी में आते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करते हैं, फिर मेमोरी से मेमोरी रिलीज़ कर देते हैं. तो इसलिए जो नया प्रोसेस जनरेट होगा वो किस मेमोरी लोकेशन पे लोड होगा, ये ना कोई प्रोग्रामर बता सकता और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एडवांस में ये बता सकता है. सिमिलरली फॉर मैक्सिमाइजिंग मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोसेसेस आर स्वैप्ड इन और आउट ऑफ द मेमोरी. जैसे कोई प्रोसेस है, लार्ज प्रोसेस है जो सिंपली वेटिंग स्टेट में है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, सो बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दूसरे प्रोसेसेस को अकोमोडेट करने के लिए उसको मेमोरी से स्वैप आउट कर देता है और बाद में उसको स्वैप इन कर देता है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ए स्वैप्ड आउट प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड 40% ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन विद 60% एग्जीक्यूशन रिमेनिंग. नाउ व्हेन ए प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट ऑफ द मेमोरी लोकेशंस आर फ्रीड अप. The operating system loads different processes in that memory. Now when operating system swap this process in the memory, it may not load in the same location and nobody can tell this in advance. For this purpose it needs relocation. That means translation of logical addresses into physical addresses. Now an operating system knows the location of process control block of every process. Operating system knows the address of the first instruction. Similarly, due to process control block, operating system knows the memory limits for stack, text section and data section as well. So what an operating system does, it actually updates the address translation mechanism. It updates or retranslates the logical addresses into new physical addresses. This process is known as relocation. Now what is protection? A multi-programming environment has many processes residing in the memory. So one process must be protected from access of another process if the processes are non-cooperating processes. So operating system should ensure that the memory limits of one process are kept safe from another process. In other words, you can say that if we have process A and process B that are independent processes, then the operating system should not allow process A to access the memory limits of process B. However, if we have cooperating processes or if processes are working on shared data, then operating system can relieve this protection mechanism and provide access to the shared portions as well. Similarly, user processes can't access operating system programs without using system calls or without permissions. Now we have sharing. In certain cases, sharing is needed. For example, we are working on 2 PowerPoint files and we try to open 2 PowerPoint files. So in this case, operating system efficiently behave करेगा अगर वो PowerPoint का प्रोसेस एक चलाए लेकिन उससे फाइल्स 2 मैनेज करें. सो इससे बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, हम मेमोरी को ज़्यादा एफिशिएंट मेथड में यूज़ कर सकेंगे क्योंकि हम कोड जो है उसको शेयर कर रहे हैं अमंग डिफरेंट फाइल्स. सिमिलरली कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर डाटा, एक्सेस टू शेयर डाटा. So we can have shared memory segments that must be declared by the processes to instruct operating system that these portions are not restricted portions.
but shared memory shouldn't be accessed by other non-cooperating processes. For example, we have three processes, process A, B and C. Now process A and B are cooperating while the process C is totally independent. Operating system should only share the memory locations between the process A and B, and it should not allow the process C to access the shared portion. So in other words, you can say that operating system should ensure the shared memory portion that is shared between a group of or among a group of processes, and no other process should be allowed to access this shared data. Then we have program translation and address space. A program is a set of instructions and variables, that is symbolic addresses. Whenever a CPU works on these programs, it generates logical address, and logical addresses are controlled and managed by logical address space. So whenever a program is loaded into the memory or is converted into a process, its symbolic addresses are translated into logical addresses, and logical address space is translated into physical address space. So this is known as program translation and address space translation. Now what translators do? Translators generate relocatable object code from source code. Now what is a relocatable object code? By relocation we mean that we can change its addresses. The addresses are not fixed. These relocatable object code modules are linked to other modules known as load modules. So actually load modules are loaded into the memory. Now what is address binding? Translation of a relocatable object code into a physical address is known as address बाइंडिंग. यानी जब भी आप रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड जो है, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, उसको जब आप फिजिकल मेमोरी में लोड करते हैं तो ये रीलोकेटेबल एड्रेसेस जो हैं ये फिजिकल एड्रेसेस में चेंज हो जाते हैं. सो ये वर्किंग बेसिकली कौन करते हैं? ट्रांसलेटर्स करते हैं. सो इसके लिए हम दो टाइप के रजिस्टर्स यूज़ करते हैं. वी हैव ए बेस रजिस्टर एंड ए लिमिट रजिस्टर. Now a pair of registers, base register and limit registers, define the logical address space. Now CPU must check every memory address generated in the user mode to be sure that it is between user and between base and limit for that user. For example, ये हमारे पास एक मेमोरी की लेआउट है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज़ ए प्रोसेस और ए यूज़र प्रोसेस. Now the base address of this process is this, and the ending memory limit for this is this. So this is the limit address. Now here is the address binding mechanism using base and limit register. CPU generates logical addresses. Now a logical address is checked against the base address or a base register of that program. If the address meets this condition, then we move to the other part. Now other part involves another decision, that is base plus limit. So if the logical address lies in this limit, base plus limit, then we say that this address is legitimate and it is translated into the physical address. But if this condition is violated, it is an error condition. तो जैसे आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक फ़िज़िकल मेमोरी है, इसमें एक प्रोसेस है, यहाँ पर बेस रजिस्टर है और लिमिट रजिस्टर है. CPU जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है A. सो इसमें बेसिकली क्या होगा, हम A को ऐड कर देंगे बेस रजिस्टर में और चेक करेंगे कि B प्लस A जो है वो लिमिट रजिस्टर से कम, बेस प्लस लिमिट से कम है या नहीं है. सो अगर ये कम है तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, अदरवाइज़ इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी. Now we have loading and linking. There are three types of loading: absolute loading, relocatable loading and dynamic loading. Now what is absolute loading? Absolute loader copies load module into the memory and assumes that logical addresses are the final absolute or physical addresses. So it means that we don't need any type of address binding or address translation. So this scheme is never used. Now what is relocatable loading?
Relocatable loaders add offset to the logic addresses while copying into the memory module. So it means that these type of loaders generate relative addresses. Suppose M is the start address, so it is the base address. To get the physical address, M is added to the base to get the relative address. But in this case, programs need to be loaded into the contiguous memory locations. In the next lecture, we will discuss contiguous and non-contiguous memory locations. But relocatable loading doesn't support swapping. और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्वैपिंग जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, डेडलॉक को मैनेज करने के लिए, स्केजुलिंग को मैनेज करने के लिए, इसी तरह प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए, तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म रिक्वायर है जो स्वैपिंग को भी सपोर्ट करे. नाउ वी हैव डायनेमिक लोडिंग. नाउ ए relocatable loading uses contiguous memory locations. So if a process is swapped out, other processes can consume its space. So whenever this process is swapped in the memory, we cannot guarantee that the process will be loaded into the same memory locations again. For this, we use dynamic loading that solves the issue of swapping easily. Now we have linking. Now what is linking? Linking is a process that joins several modules and combines them into a load module. For example, header files आप attach करते हैं, आप different dynamic linking libraries attach करते हैं. So linker basically links the load module with other modules. So there are two types of linking, static and dynamic. Now what is static linking? In static linking, system libraries and program code combined by the loader into a binary program image. But in dynamic loading, the linking process is postponed until execution. तो static linking में आप जो है लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर देते हैं, कंपाइल टाइम पर भी लिंक कर सकते हैं और लोड टाइम पर भी लिंक कर सकते हैं. लेकिन अगर हम डायनेमिक लिंकिंग की बात करें तो डायनेमिक लिंकिंग जो है वो रन टाइम में एग्जिस्ट करती है. सो व्हाट हैपन्स इन अ डायनेमिक लिंकिंग? एवरी प्रोग्राम हैज़ ए कोड फॉर अटैचिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या विजुअल सी शार्प में हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, हम लाइब्रेरीज को जावा में इंपोर्ट करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि हर प्रोग्राम में स्मॉल पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको हम स्टब कहते हैं. नाउ स्टब इज़ यूज टू लोकेट द अप्रोप्रिएट मेमोरी रेजिडेंट library routines, or stubs are used to find out the location of a library in the memory. So whenever a stub finds the file or the addresses in the memory, it replaces itself with the address of the routine or address of the library, so to continue execution. However, if the required file or required library is not present in the memory, a stub attempts to load the memory or load the file from the hard disk storage. So this is here operating system first checks if the routine is in process memory or not. If it is there in the process memory, it is executed, and if it is not present in the address space, operating system simply loads it to the address space. So dynamic linking is used for linking dynamic linking libraries, that are the DLLs. Now we have the memory management unit. A memory management unit is a hardware device that maps virtual addresses to physical addresses. For this we will use different types of registers like base register and limit register. So a user program deals with the logical addresses, it never sees the real physical addresses. Execution time binding occurs when reference is made to a memory location during the runtime. So in this case, logical addresses are translated into physical addresses. So these things are performed by the memory manager part of the operating system in cooperation with the memory management unit hardware.